अरे यार, सर को कैसे अनम्यूट करूं? कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा मेरे को भाई? क्या करूं भाई मैं? आवाज
सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सुनाई दे रहा है। बस हम लोग शुरू करते हैं कुछ देर में। जी। हाँ, करते हैं। संजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। जो जिज्ञासा की सर जो जिज्ञासा के कंपटीशन हो रहे हैं, तो उनकी जो वीडियो है वो आज शाम तक सबमिट कर दें हम लोग। देखिए, आप लोग जो है ना, क्योंकि हम मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, आप ये जान ही रहे हैं कि ये इमरजेंसी का समय है एक प्रकार का। तो आप लोग जो जी है ना, सर। 29 तक मैं जी कोई सर। रिजल्ट नहीं कर, जब तक कि आप चाहे भेजते रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी 29 सर, के बाद ही थैंक यू जो सर। लास्ट डे होगा, उसके बाद ही हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है। जो कंपटीशन जिस जिस दिन भी है, उस दिन अगर आप भेज पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 29 तक कभी भी भेज दें, क्योंकि रिजल्ट अब जी 29 सर। को नहीं डिक्लेयर होगा, 29 के बाद ही घोषित होगा। जी सर, थैंक यू और सर। सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर जो निबंध है सर, उसको सर पीडीएफ बना के सेंड करना है सर। हाँ, निबंध आपने लिख लिया है तो उसको पीडीएफ बना के लिखना है, तो हाथ का लिखा हुआ टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सर मतलब अगर अभी नहीं लिखा तो सर 29 तक तो उसको सेंड कर सकते हाँ, हैं। 29 तक भेज सकते हैं आप। जो भी चीज है, ठीक जितने है। भी स्कूल वाले बच्चे भी अगर हैं, कोई स्कूल वाला भी है, तो वो भी ध्यान रखें कि जो उनके कंपटीशन कल भी हो गए, उनको भी अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में सेंड करना है सर। ग्रुप भी है आपका डला हुआ है, पर लेकिन मान लीजिए किसी ने अगर रजिस्टर नहीं किया है गूगल फॉर्म के तौर पे, तो वो मेरे मेल आईडी पे भेज दे मुझे। ओके सर, बता दे थैंक लोगों यू को सर। जो आपके साथ में इन्फॉर्म कर दे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको इन्फॉर्म कर दे। थैंक यू सर। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी भी आ चुके हैं, और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब का। Kariman Naik and Sri. विजेता सिंह मैडम आ चुकी हैं क्या?
हेलो हेलो, यस सर। ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जामदार साहब, वीडियो ऑन कीजिए आप। नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए, हम जो जिज्ञासा प्रोग्राम है, इस जिज्ञासा कार्यक्रम का जो आज द्वितीय दिन है, ये हम आज शुरू कर रहे हैं। जी जैसा सर। कि आप ये जानते हैं कि ये कार्यक्रम बरसों से 15 वर्ष हो चुके हैं लगातार जबलपुर में चल रहा है। इस बार ये बिल्कुल नया समय है कि हमको जो है इसे इस फॉर्म में करना पड़ रहा है। तो हमने इसको पूरा उसी तरह का रूप दिया हुआ है कि वर्चुअल मोड में ये हो सके। कोविड का समय है और आज जो है एक कोरोना वायरस है, आया हुआ है। जरूरी नहीं है कि वायरस ये चला जाए तो उसके बाद दूसरा वायरस ना आए। तो उसके लिए मुख्य बात यही है कि आपको जीना सीखना होगा न्यू नॉर्मल के साथ। जैसे कि जिज्ञासा भी न्यू नॉर्मल के साथ जीने की कोशिश कर रही है। एक नया तरीका हमने खोजा हुआ है इसमें करने के लिए कि उसको वर्चुअल मोड में, जैसे सेमिनार है तो सेमिनार हम वर्चुअल मोड में करें। और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कोई गीत है इसमें, अगर एनवायरनमेंट पे गीत है तो उसको भी हम इसी तरह से करें। तो सारा कुछ हमने वर्चुअल मोड में किया हुआ है। वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको जीना सीखना पड़ेगा। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। मैं आज के रिसोर्स पर्सन विजेता सिंह जी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से तुरंत निकल के आए हुए हैं, मैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब का, जिनका जब से मैंने जिज्ञासा शुरू किया है तब से लेकर आज तक मुझे हमेशा आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी से, जो कि समाज सेवी हैं, बहुत बड़े यहाँ के जबलपुर के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिशियन हैं, और इसके साथ ही राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी से का मैं स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने अमूल्य वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो विजेता सिंह जी, जो कि अमेरिका से हैं, वो बोलेंगी इसमें विषय में। डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब। सभी को नमस्कार। मैं एक्चुअली आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और शायद हो सकता है कि आज पूरे विषय को मैं ठीक से सुन ना पाऊं, पर आई एम श्योर कि आप इसका रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे संजय जी। और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसकी व्यवस्था तत्काल बना लें। तो आदरणीय संजय जी से अनेक वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं और कई वर्षों से इस जिज्ञासा कार्यक्रम के अनेक जो आयाम हुए हैं उनको मैंने देखा हुआ है। मेरा अनुभव ये है कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर उत्कंठा है, उनके अंदर जानने की ललक है कि हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से किस प्रकार का विज्ञान था। वो विज्ञान उन्नत होते होते उसकी जो श्रृंखला है वो खंडित कैसे हुई, क्यों हुई। जब हमारे ऊपर दूसरे राष्ट्रों ने आक्रमण किया, दूसरे राष्ट्रों के आतताइयों ने आकर के और हमारे देश के ऊपर अपने विचार थोपने का प्रयत्न किया, तो उसके चलते हमारे देश के अंदर का जो मूल विज्ञान था वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसने सफर किया। और जब भी कभी संस्कृतियों का आपस में संपर्क होता है और संघर्ष होता है या विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी विषय में मंथन होता है तो उससे नवनीत ही निकलता है। अर्थात
अच्छा बुरा इन दोनों चीजों का भी अगर मंथन किया जाए, इन दोनों चीजों को भी अगर एक साथ मिला करके और उसके अंदर एक घर्षण निर्माण किया जाए, तो उसमें से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ उन्नत, कुछ ना कुछ बेहतर निकल कर आता है। कई बार विष भी निकलता है, हलाहल निकला अमृत समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से, पर फिर हलाहल को पचाने की क्षमता वाले शिव भी होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि विचारों के इस आदान प्रदान में और जिज्ञासा के इस उपक्रम में हमको हर विधा को देखना चाहिए। जो भारत की प्राचीन विधा है उसको भी देखना चाहिए, और जो वर्तमान विज्ञान का जो परिवेश है वो चाहे हमारे देश का हो अथवा विदेशों का हो अथवा पाश्चात्य देशों का हो, अगर हमें लगता भी हो कि यह हमारी संस्कृति के विपरीत है तो भी उसको देखकर उसका विश्लेषण करना चाहिए, और उसमें से जो अच्छी बातें हैं, जो सारगर्भित बातें हैं, जो उसमें से समाज के लिए हितकारी बातें हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए जो लाभदायी बातें हैं, उन सारी बातों का स्वीकार हमें करना चाहिए। हमारी संस्कृति आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, इस बात को मानने वाली संस्कृति, अर्थात अच्छे विचार किसी भी दिशा से आए, कहीं से भी आए, तो भी उनका हमारे संस्कृति में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में स्वागत है। और इसलिए ये जो आज का उपक्रम हो गया है, मैं विजेता सिंह जी का भी स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके विषय का हम सबको आज आनंद भी मिलने वाला है, और हम सब और जितने लोग जुड़े हुए हैं वे सब से लाभान्वित होने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए मुझे थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, तो मैं निकल जाऊंगा, पर इसका रिकॉर्डिंग मैं जरूर देखूंगा। और संजय जी को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अब जो हमारा व्याख्यान है वो शुरू करने वाले हैं। सब लोगों से आग्रह है कि अपना जो है माइक्रोफोन बंद करें। जैसे मैंने बताया कि मैं भी सीख रहा हूँ, ये नया हल्दी मार्केट में आ गई है। हुई थी। सब लोग प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। जाएंगे एक हल्दी की व्यवस्था बना लो हमारे। सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। और हम अब आज का हमारा जो लेक्चर है, मैडम विजेता सिंह जी, जो कि घुमा दो, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और न्यू जर्सी यूएसए के से सीधे हमारे बीच में आई हुई है। मैडम को तो मैंने बोल दिया है कि मैडम परेशान जो है अपने माइक है वो बंद रखिए अपने। देखते हैं भैया को फोन लगा रहे कई दिन से तो उठा नहीं रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो तो ऐसे बोले कि 4-5 दिन लगाए तो उठाए नहीं, तो मैंने बोली कि मैडम फिर से तबीयत खराब है तो शायद इसलिए नहीं उठाए होंगे। तो बोली अच्छा, तो फिर मैंने बोला कि बोली कि अरे आना था कल्पना, समझ नहीं आ रहा क्या कैसे। तो मैंने मैडम मत परेशान हो, मुझे तो मैडम जो है माइक बंद कर दें अपना, आप ऐसे करना वहीं मिले। डिस्टर्बेंस हो रहा है। कल्पना नागेश्वर अपना माइक बंद कर दें अपना। मत जाता, कोरोना फैला है। जितेंद्र शिवरे अपना माइक बंद कर दें, ये आवाज इनकी हो रही है। पैकरा मैडम अपना बंद कर दें माइक। मेरा मन था कि मैं आऊंगी तो वहाँ मान लीजिए मैं आपके साथ। मैडम आप लोग सुन नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि माइक बंद कर दें, अपने माइक बंद कर दें प्लीज। मैंने कहा मतलब 7 तारीख को क्या मेरा ये था कि मैं आऊंगी तो बस मेरे को गाड़ी मिल जाती तो मैं अपना आती जाती रहती हूँ ना, 1 घंटे के लिए आ गई वहां पे। हाँ 7 दिसंबर को सब लोग जा रहे हैं। 10 दिन है, 12 दिन। मम्मी लोग जा रहे हैं तो 10 को जाएंगे। संजय सर आप ही सबको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो बार लोग आ रहे हैं, वही मैं देख रहा हूँ। मैं मेरे में ही घंटी मार देना। सर होस्ट सबको म्यूट कर सकता है, आप म्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो सेटिंग में मैंने शुरुआत में नहीं की, वह सुन भी नहीं रहे ना ये लोग। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो चल रहा है वो चलने दें, क्योंकि इसमें कल प्रॉब्लम आई हुई थी, लोग सुन भी नहीं रहे, मैं कह भी रहा हूँ, और सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी माइक बंद हो चुके हैं लोगों के, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपने माइक बंद कर लें।
क्योंकि सीधे अमेरिका से अभी रात में वहां पर कम से कम 12 से ऊपर हुआ होगा। हमारे रिक्वेस्ट पे वो इतनी दूर से यहाँ पर आई हुई अपनी रात खराब करते हुए लेक्चर देने के लिए, तो मेरा आग्रह है कि सब लोग उनके लेक्चर को सुने। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैडम विजेता सिंह का, कि हम सुनते रहे कि कोविड-19 आया और हमने लॉकडाउन लगाया। तो ये लॉकडाउन के बाद जो है एक एनवायरनमेंट पे कुछ एक इम्पैक्ट आया है। ऐसा कहा जाता है कि एनवायरनमेंट में भी सुधार हुआ है। तो इसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी एक विजेता सिंह जैसा साइंटिस्ट ही दे सकता है, जिन्होंने अपना खुद का अध्ययन किया हुआ है। मैडम अगर आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकती हैं, इंग्लिश में भी बोल सकती हैं। और चूंकि मैं यहाँ पर जबलपुर में बैठा हुआ हूँ, जो कि एक मध्य भारत का हिस्सा, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों भाषाएं का उपयोग कर सकते हैं या इंग्लिश में उपयोग कर सकती हैं। मैं सीधे आपका समय ना लेते हुए ज्यादा, मैं सीधे विजेता सिंह मैडम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो है अपना व्याख्यान शुरू करें। मैडम विजेता सिंह। Thank you, sir. Hello, everyone. The topic of my talk today is global environmental impact of COVID-19. As we all know, almost everyone around the world is stuck in a pretty different lifestyle due to COVID-19. We never ever thought that we would be facing lockdown situation in life. But here we are. I would be touching on the direct and indirect or secondary impact of COVID-19 on global environment in general and specifically in India. I'll start with the general global environmental impact of COVID-19. With lockdown or stay-at-home orders in effect in countries across the globe, due to the coronavirus pandemic, there has been a steep decline in travel and economic activity worldwide. With less traffic comes less pollutants like carbon monoxide. Of course, once non-essential employees are returned to work, the traffic congestion and pollution will rise accordingly. Will there be any lasting effect on the environment? This is a big question. Air travel has also taken a major hit. Thanks to the order to shelter in place, and greenhouse gases will predictably decline too. Airplane emissions of carbon monoxide reached over 900 million tons in 2018 and are projected to triple by 2050, according to the United Nations Aviation Body. The issue is that even as airlines are becoming more fuel efficient, the increase in demand was projected to outweigh these gains. Still, while this trend will cut greenhouse gas emissions from air travel, the result has also been mass layoffs and voluntarily unpaid leave. Has the drop in traffic and air travel had a significant impact on greenhouse gas emissions such as nitrogen dioxide and carbon monoxide? It appears so. In New Delhi as well as in New York City, carbon monoxide mainly from cars has been reduced by nearly 50% compared with March 2019. Unfortunately, this dip in carbon emissions will likely only last as long as the virus does. Actively will ramp up once the pandemic subsides, creating a rebound effect seen in other crises. The 2008 financial crisis caused a emissions creep back at a rate faster than before the crisis. After all, measures to halt coronavirus spread will not have a long-lasting effect on climate change. Structural change is needed. But the fact remains that some pre-existing trends like the risk of remote work, rise of remote work have been accelerated with the pandemic and will have lasting effects on cutting carbon emissions and slowing global warming. The huge demand for disposable medical products such as single use gloves,
Surgical masks, empty IV bags in the wake of the pandemic has created a deluge of medical waste. The volume of medical waste is reported to have risen from 40 to 240 tons a day at a height of the pandemic. Plastic packaging is enjoying an increase in popularity due to the coronavirus pandemic. Online shopping packaging like Amazon and meal kit deliveries like Blue Apron are just two e-retailers contributing to the overflow of the cardboard and plastic. Now, with the public afraid to leave the house or under strict shelter in place rules, there's been a surge in demand for online shopping. In fact, Amazon's sales have increased to the point that they announced they need to hire 100,000 new employees to meet demand. The fallout from this huge increase in packaging waste remains to be seen. It is predicted that there will be more plastic in the ocean than fish by 2050. The coronavirus pandemic will undoubtedly accelerate this trend while contributing to other problems like clogging drainage system, litter, and releasing pollutants when burned. Since the coronavirus pandemic began, an idea began circulating online that the earth is regenerating itself. Suppose sightseeing of wildlife roaming free in urban areas gain tens of thousands of likes and shares. Roaming free, some of these reporters proved to be true and others picked by the likes of The Guardian and the Japan Times were false. In Nara, Japan, Sika deer wander through city streets and subway stations because the tourists who normally fed them in city parks have evaporated. Indian social media went wild about footage of a stage scampering through Dehradun, the capital of the northern state of Uttarakhand. A puma turned up in the center of the Chilean capital, Santiago, which is under curfew. Neither of these accounts have been disproven. Other accounts overlook the fact that these animals were already regular visitors to these areas. Probably the most famous story was the viral social media post reporting that dolphins and swans had returned to Venice canals. This is a fake news, says National Geographic. The dolphins were filmed outside Venice and swans were regular visitors to the canal. The popularity of these animals' story shows the need to find meaning in this devastating global pandemic and that there is a purpose behind the thousands of deaths. Not to mention that emotions are running high and happy animal footage can feel like the perfect antidote to stress. Coronavirus pandemic impact on energy. The internet exchange in Frankfurt set a new world record for data throughput on March 10, resulting in more energy usage. At more than 9.1 terabits per second, the new sound barrier has been broken thanks to more people streaming video and searching for information on coronavirus. Italy had a roughly 70% increase in broadband demand and France had a 30% increase, according to the CNN. In South Korea, online gaming activity jumped 30% between March 5 and March 12, while streaming of content from animal sites has doubled. Servers, not everyone agrees that streaming is so energy intensive. Experts argue that streaming content is largely hosted locally and does not take much energy to retrieve. Reports Mashable. On the other hand, big data and algorithms like those used to display different products to different online shoppers eat up much more computational energy via huge data centers. Data centers consume 1.5% of the total power in the US, according to 2007 government data. The move to remote working in the wake of coronavirus pandemic lessens reliance on enterprise servers
but more on cloud services, which requires its own energy juggling data centers. Still, data centers only contribute to 0.3% of the world's carbon emissions and take up 1% of global energy demand, says Nature. In summary, most environmental impact of coronavirus pandemic, such as a decline in carbon emissions and increase in the medical waste, will be temporary. The real lesson lies in some pre-existing climate-friendly trends which have been accelerated. Business travel could decline as executives realize video conference can achieve the same effect. International trade might roll back as countries realize how reliant they are on the global supply chain and decide the demand for remote work can still be productive from home, while downsizing offices or getting rid of them altogether and the expenses associated with them, of course. Doubtless, the loss of life from COVID-19 will be devastating. There is nothing to celebrate about such a horrific tragedy. It is perhaps a small victory against such a reality to learn from what's happened and apply it to fight climate change and slow global warming in the future. Is there anything we can learn from this tragic tragedy going forward to reduce waste, emissions, and our carbon footprint? Here is one of the very interesting response. One of the things that we can learn from the pandemic's effect on the environment is that we can actually have an impact if there were a global effort to do so. It is inspiring how cities that have extreme levels of air pollution, from Los Angeles to New Delhi, people are seeing the difference of what the air and life quality would be like if there were a minimal level a number of cars and emissions from polluting industries. Although we didn't yet have the data available, it is likely that the reduction in air pollution is responsible for the anecdotal observation of reduced number of asthma and heart attack episodes coming into the emergency departments. Another lesson will be how productive many workers can be while working from home when they are given the proper tools. I think that many companies will see the value of having many workers work from home, reducing the need for commuting and also reducing the office space needed to combat business. Now, I would like to talk more specifically in context of India. Every winter, in India, every winter, New Delhi and other big cities in the northern are enveloped in a blanket of smoke as farmers burn crop residue. The air tends to clear a little in spring. However, in the first few months of this year, India experienced a significant decline in some pollutants. The lockdown imposed by Prime Minister Narendra Modi on the country's 1.3 billion people could be a major contributing factor. However, there may also be other factors impacting air quality. According to Palvi Pant, an air quality scientist at the Health Effects Institution in Boston, air pollution levels are often influenced by local meteorology, like temperature or wind speed. Several early analyses are showing declines in air pollution in regions where shutdowns have taken place. However, any such analysis should consider all relevant factors, Palvi Pant told Reuters. Beyond improvements in outdoor air quality, scientists are also curious how lockdowns have affected indoor air quality, with millions of people staying at home for far longer than usual. As we continue to talk about improvements in air quality, outdoor air quality, people are spending a lot more time indoors, and the exposure patterns for indoor air pollution might be different at this time too. Not all positive, but
Not all the environmental consequences of the crisis have been positive. Volumes of unrecyclable waste have risen. Severe cuts in agriculture and fishery exports levels have led to the generation of large quantities of organic waste. Maintenance and monitoring of natural ecosystems have temporarily halted, and tourism activity to natural areas has ceased. Local waste problems have emerged as many municipalities have suspended their recycling activities over fears of virus propagation in recycling centers. Food retailers have resumed using plastic bags at checkout points, citing health concerns over consumers' reuse of paper bags. In addition to this, due to stay-at-home policies, many consumers have increased their consumption of takeaway food deliveries with single-use packaging. All these developments have created acute challenges for the waste management industry at a time when they are operating with limited capacity due to the coronavirus crisis. With the emergence of import restrictions in export markets and sharp decline in the availability of cargo transportation services, the coronavirus crisis has led to the increased volume of unshippable agricultural and fishery commodities. Because this waste is left to decay, levels of methane emissions, a greenhouse gas from decaying produce, are exposed to rise sharply in the crisis and immediate post-crisis months. As exports of agricultural and fisheries products have declined, the production levels have plummeted, causing unemployment levels in both sectors to grow substantially. Many post-harvest processing workers in these sectors are women, supporting households, causing extreme hardships, particularly for low-income women in developing countries where social safety nets are not in place. Natural ecosystems and protected species are at risk during the coronavirus crisis. In many countries, environmental protection workers at national parks and land and marine conservation zones are required to stay at home in lockdown, leaving these areas unmonitored. Their absence has resulted in a rise of illegal deforestation, fishing, and wildlife hunting. Many of the environmental challenges caused by the coronavirus crisis will gradually resolve on their own once the crisis comes to end and previous levels of economic activity will resume. But it is also true that the benefits of air pollution reductions will also be erased. Overall, the crisis may thus have no permanent environmental effects. However, what we have learned about the environmental benefits and risk of sharp drops in global economic activity will certainly help us to better understand the mechanics of environmental sustainability, societal consumption patterns, and how we can reduce environmental degradation in a future crisis-free world. Now, there is need for action. Attention must be given to threats on environment and natural resource bases as a result of the coronavirus pandemic and consequential social and economic impacts. If the crisis is prolonged, many will be forced to abandon existing sustainable production in order to generate income quickly in domestic markets, potentially resulting in further poverty and overexploitation of natural resources and ecosystems. Amid the COVID-19 pandemic, a national-wide lockdown is imposed in India, initially for 3 weeks from 25th March to 14th April 2020 and extended up to 3rd May 2020. Due to the forced restrictions, pollution level in cities across the country drastically slowed down just within few days,
which magnetize discussions regarding lockdown to be the effectual alternative measures to be implemented for controlling air pollution. The present slide presents the air quality scenario amidst the lockdown period scientifically with special reference to the megacity Delhi. Excuse me. With the aid of air quality data of 7 pollutant parameters as shown in the slide for 34 monitoring stations spread over the megacity, national air quality index was employed to show the spatial pattern of air quality in pre and during lockdown phases. Effect of lockdown amid COVID-19 pandemic on air quality of megacity India. As can be seen from the slide, particulate matter 10 and particulate matter 2.5 concentrations reduced by half in compared to the pre-lockdown, and similar the other facts which we can see from the slide. On the second and fourth day of lockdown, about 40% to 50% improvement in air quality was seen, which is enormous. Among the top 20 most polluting cities in the world, 15 are in India. Suspension of industrial activities, including the coal-based sectors, transportation, and other activities during lockdown imposed due to the outbreak of COVID-19 caused rapid improvement in air and water quality across the country. Water stress in terms of water availability, access, and quality is another aspect of the bigger problem that constrains communities from maintaining basic hygiene and sanitation during outbreak of infectious diseases such as this one. Hence, dealing with pollution to maintain carrying capacity of the ecosystems and community health in a highly populated country with unplanned human settlements is a big challenge. Recent experiences in India, which has been substantially impacted by the COVID-19 pandemic, points out to a number of concerns in that line. The current scenario of environmental regulations in India becomes vital to take into account in the present context of an overlap of external threats like climate change and health pandemic, both of which has widespread impact on the country through multiple chain effects on the ecosystem, human and social well-being and economy. But this is true that this pandemic has prepared us well for the future if such kind of crisis is seen in the future, and if we give attention to all these facts and we do something to improve the environment, then in the near future we will be well prepared for ourselves as well as to protect the environment. Thank you. Stay safe and stay healthy. I am really thankful to Dr. Avasthi for calling me here for the presentation. Thank you all. अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं हृदय से आभार देता हूं विजेता सिंह जी का कि आपने एक पूरा एक समग्र वैश्विक पर्यावरण पे जो अपने विचार रखे कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। पर मेरा ऐसा विचार है कि 1-2-3 महीने के लॉकडाउन से के आधार पे ये कहना कि पूरे विश्व में या भारत में प्रभाव हुआ है एनवायरनमेंट पे, तो मैं थोड़ा सा इसको अतिशयोक्ति समझता हूँ। इतनी जल्दी हम इसका इम्पैक्ट को हम इतनी जल्दी मापन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि लोकल कंडीशन में ऐसा परिवर्तन हुआ होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, और कुछ लोगों को
ऐसे कुछ इस तरह के, जैसे कुछ कह रहे हैं कि कुछ जो वन्य जीव हैं वो नजर आने लगे जहाँ पहले नहीं थे। ये हो सकता है क्योंकि अगर थोड़ा सा आपका जो नॉइस पॉल्यूशन या और पॉल्यूशन कुछ कम हुआ होगा उस समय के लिए, तो कुछ ऐसा कंडीशन हुई होगी। बस मूल बात यही है कि हमें कोशिश ये करना पड़ेगा, प्रयास ये करना पड़ेगा कि जो भी वायरस है वो हमारी ही जीवन शैली के कारण ही आते हैं, और अकेला ही कोरोना वायरस ही सब कुछ नहीं है। वायरस आते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि 1996 से हम लगातार देख रहे हैं कि हर 4 साल में 3 साल में एक नया वायरस आ जाता है। अब इसी कोविड-19 को ही देखिए, कोरोना वायरस है, उसमें म्यूटेशन हुआ और वो आपको कोविड-19 के रूप में अपीयर हो गया। तो इस प्रकार से वायरस लगातार आते रहेंगे, तो हमें न्यू नॉर्मल के साथ जीना सीखना होगा और निश्चित तौर पर स्वच्छता अपनानी होगी, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और हमारे इन्वायरमेंट की भी केयर करनी पड़ेगी कि हम जिसमें रह रहे हैं उसके साथ हमें स्नेह से रहना पड़ेगा। तो आज जो है ये एक संदेश है हमारे लिए, और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। और मैं फिर हृदय से आभार देता हूँ विजेता सिंह जी का कि आपने जो है अपना एक अमूल्य समय, मैं पहले भी कह रहा था कि बड़ा ऑड टाइम था आप लोगों आपके लिए कि आप इतने ऑड टाइम पे यहाँ पर आई और आपने ये लेक्चर दिया, और ऐसे ही जुड़े रहिए उन्मेष के साथ में। और हम ऐसे भी आगे जाकर, हो सकता है कि अगला वर्ष किसी वायरस का समय ना हो, क्योंकि 2020 तो पूरा तरह से कोरोना ने खत्म कर दिया। हो सकता है कि 2021 में अगर हम रहे, ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी, तो अगली जब जिज्ञासा हो तो हो सकता है कि फिजिकली आप यहाँ पर आए और लोगों से बात करें। और मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा अगला लेक्चर जो है वो दोपहर 1:30 बजे से है, तो आप लोग करीब 1:30 बजे करीब जो है फिर से उपस्थित हो। मैं, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बोलिए, नहीं तो मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोगों का आभार, आप लोग सभी यहाँ पर आए, और 1:30 बजे पुनः आपकी उपस्थिति की मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा 2 व्याख्यान है। कल जो हमारा एक व्याख्यान अधूरा रह गया था उसको भी मैंने मैसेज दिया हुआ है, ग्रुप में भी डाला हुआ है, उसको देखिएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो एंट्रीज हैं, क्योंकि ये साइंस फेयर है, जो एंट्रीज है उस एंट्रीज को आप चाहे तो मुझे मेल करते रह सकते हैं 29 तक, हम उसके बाद भी उनको रिजल्ट देंगे। हमारे बीच में रमेश जी हैं क्या? रमेश सर हैं क्या, या रमेश जी हैं क्या? बेंगलोर से आए हुए थे, अगर वो है तो 2 शब्द वो बोले तो ठीक रहेगा। मैं खन्ना सर से आग्रह करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। डॉक्टर वी के खन्ना सर, डॉक्टर वी के खन्ना सर। डॉक्टर वी के खन्ना जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विजेता सिंह जी की, ये जो उन्मेष हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके आप फाउंडर मेंबर हैं। जब से हमने जिज्ञासा शुरू की है तब से ये हमारे साथ में है। डॉक्टर वी के खन्ना साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो 2 शब्द अपने बोले। डॉक्टर वी के चलिए, शायद संपर्क टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। वो भी जैसे लॉकडाउन के समय से कानपुर में हैं वो, और शायद अब वो वहीं रहेंगे ऐसा लगता है। तो हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम इसको सेशन को समाप्त करते हैं। 11:30 बजे हम फिर से यहाँ पर होंगे। धन्यवाद विजेता सिंह जी। सब लोग 1:30 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।